Hey everyone, a very welcome to my YouTube channel. It's me Hira's Anatomy Corner. Today the topic of our discussion is introduction and organization of the nervous system. First we look at the definition of the nervous system. Nervous system is a regulatory system of the body that consists of the neurons and the neurological cells. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास वो रेगुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स और न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं. द बॉडीज प्राइमरी कम्युनिकेशन एंड द कंट्रोलर सिस्टम, ये हमारी बॉडी का प्राइमरी कम्युनिकेशन और कंट्रोलर सिस्टम होता है एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चरल कैटेगरीज एंड फंक्शनल कैटेगरीज. Structural subdivision of the nervous system are central nervous system and peripheral nervous system, CNS and PNS. Central nervous system consists of the brain and the spinal cord, and peripheral nervous system consists of the cranial nerves, spinal nerves and the ganglia. Cranial nerves extend from the brain, spinal nerves extend from the spinal cord, and ganglia are located outside the central nervous system. Now this diagram shows that central nervous system consists of the brain and the spinal cord, and peripheral nervous system consists of the cranial nerves, spinal nerves and the ganglia. Now according to the functional organization, it can be divided into afferent division and afferent division. जो बेसिकली हमारे पास एफेरेंट डिवीजन होता है ना, वो हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है रिसेप्टर से और ट्रांसमिट करता है इस इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए, जो सेंसरी एफेरेंट डिवीजन होती है वो आउटपुट को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब आपको एक फ्लो चार्ट शो किया गया है जिसमें नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स बताई गई हैं कि नर्वस सिस्टम कैटेगराइज होता है एफेरेंट डिवीजन और एफिनेंट डिवीजन में. और जो एफेरेंट डिवीजन होता है वो कैटेगराइज हो जाता है सोमैटिक सेंसरी और विजुअल सेंसरी, और जो मोटर एफिरेंट डिवीजन होती है वो कैटेगराइज हो जाती है सोमैटिक, मोटर एंड ऑटोनोमिक मोटर. नाउ दिस फ्लो चार्ट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम consists of the brain and the spinal cord, and brain is further categorized into forebrain, midbrain and the hindbrain. Forebrain consists of that telencephalon and diencephalon. Midbrain is further categorized into mesencephalon, and hindbrain is further categorized into metencephalon and myelencephalon. Now we are going to discuss the central nervous system, the brain. So, an adult brain weight between 1.34 and 1.45 kg, around 3 pounds, and has a volume of about 1200 cubic centimeters. बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो एवरेज अडल्ट का ब्रेन होता है उसका जो साइज़ होता है वो 1.35 से 1.4 kg मीन्स 1 से 2 किलोग्राम की रेंज में होता है. अगर पॉन्ड्स में देखा जाए तो 3 पॉन्ड्स होते हैं एंड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1200 cubic centimeters. Brain size is not directly correlated with the intelligence, and it is not the physical size of the brain that determines intelligence. It is the number of active synapses. कि जो हमारा ब्रेन साइज होता है वो हमारे पास जो हमारा इंटेलिजेंस होता है उससे कोलरेट नहीं करता, बल्कि ये हमारे पास तब इंटेलिजेंस लेवल हमारा ज़्यादा होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिव साइनेप्सेस ज़्यादा हों. Support and protection of the brain. The brain is protected and isolated by multiple structures, that is bony cranium, meninges, protective connective tissue membrane, surrounds and portion of the brain. Cerebrospinal fluid act as a cushioning fluid. Blood-brain barrier prevent entry of harmful materials from the bloodstream. Now this diagram shows the skin of the scalp, then periosteum, then bone of the skull, dura mater, araconite matter, pia mater, then the blood vessels and etc. Now we are going to discuss the organization of the brain tissues. One is the gray matter and the other is the white matter. Gray matter consists of motor neurons and interneurons, cell bodies, dendrites and axon terminals. These are unmyelinated axons, while white matter is composed of myelinated axons. The main difference between the gray matter and the white matter is gray matter जो होता है वो unmyelinated axon से कंपोज हुआ होता है, और जो हमारे पास white matter होता है वो myelinated axon से कंपोज हुआ होता है. Now we have a common brain divisions. The first is the forebrain, and the second is the midbrain, and the third is our hindbrain. Moreover, forebrain consists of the telencephalon and diencephalon. And the major parts of the telencephalon are the cerebral cortex and the basal ganglia, and the major parts of the diencephalon are the thalamus and hypothalamus. Cerebral cortex. The word cortex come from a Latin word for a bark of the tree. जो cortex है वो हमारे पास Latin word से निकला है bark of the tree से, ठीक है. जो हमारे पास cerebral cortex की thickness होती है varies from 2 to 6 mm, and the right and the left sides of the cerebral cortex are connected by the thick band of the nerve fibers called as a corpus callosum. Bulge on the cortex is called as a gyrus, and the groove is called as a sulcus.
Another part of the telencephalon is बेसल गैंग्लिया. ठीक है, बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है कि हमें मूवमेंट प्रोवाइड करती है. इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी मूवमेंट्स को परफॉर्म कराने के लिए. So we are going to discuss the thalamus, that is the part of the diencephalon. Its function is the sensory processing. The thalamus receives sensory information and relay this information to the cerebral cortex and transmit this information to the brain and the spinal cord. Simply ये हमारे पास बेसिकली थैलेमस जो होता है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सेंड करता है और फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स फर्दर इस इन्फॉर्मेशन को थैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड में सेंड कर देता है. हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ थर्मोस्टेट. लाइक जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो हमारे पास बॉडी रेगुलेटर के तौर पे काम करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी थ्रस्ट, हमारी हंगर और हमारी सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है. मिड ब्रेन. ठीक है, इसमें हमारे पास मेसेंसिफेलन जो होता है ये हमारे पास मिड ब्रेन का पार्ट होता है. इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो हमारे पास हमें विजन में हेल्पफुल होता है, हमें हियरिंग में हेल्पफुल होता है, आई मूवमेंट्स में हेल्पफुल होता है और हमारे मोटर कंट्रोल में हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट हमारे पास है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक है मेटेंसिफेलन और दूसरा है मायेंसिफेलन. मेटेंसिफेलन जो होता है उसमें पॉन्स एंड द सेरिबेलम होता है और मायेंसिफेलन में मेड्यूला होता है और इसका बेसिक फंक्शन यही है कि हमारे होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है. नेक्स्ट है अब हमारे पास पॉन्स. ठीक है, एंड द पॉन्स आर सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम, inferior to the midbrain and superior to the medulla oblongata. Now, what is cerebellum? The word cerebellum comes from the Latin word little brain. The cerebellum is located behind the brainstem. ठीक है, ये brainstem से पीछे होता है. In some way, cerebellum is similar to the cerebral cortex. The cerebellum is divided into two hemispheres and has a cortex that surrounds this hemisphere. So let's look at the functions of the cerebellum. Cerebellum is basically helpful for performing movements, for maintaining our posture, for balancing of our body, etc. The medulla oblongata. The medulla is the most inferior part of the brainstem. ठीक है, जो medulla होता है वो हमारे पास inferior part होता है brainstem का. The cell bodies of the cranial nerves are found there. Brainstem. Brainstem is a general term for the area of the brain between the thalamus and the spinal cord. Structures within the brainstem include medulla, pons, reticular formation and tegmentum. Some of these areas are responsible for the most basic functions of the life such as breathing, heart rate and the blood pressure. और इनमें से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे लाइफ के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, लाइक जैसे ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया एंड द ब्लड प्रेशर. So hopefully this video is very helpful for all of you guys. So please like, subscribe and share my channel as well. Thank you.